हेलो डियर फ्रेंड्स, कैरियर हेल्पलाइन चैनल रे आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। आज थंबनेल लिखि आपण मन जानि पारथुए जे आमे आज डिस्कशन करबो आपनकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आपनकर जो सब जीके उडा आसे क्वेश्चन सेटर माने आपण मनकर प्रायतः आपनकर एनसीईआरटी को फॉलो करंती, बट एनसीईआरटी रो एक्सटेंडेड क्वेश्चन भी से माने तयारी करिकि दियन जेमते एथर देखिले आपनकर ओसीएस रे हला। तेणु मेन कथा है कौन ना सब आड़ को आमको जानिया दरकार पड़ो है जे क्वेश्चंस कौटू आसबार पॉसिबिलिटी अच्छी सहित करंट अफेयर को भी रिलेट करा पड़ो बुझिपारे। तेणु आज गोटे मो क्लास आनी बोधे यहाँ 2 घंटा खंडे चलो है जो मैंने जड़ित रे बहुत बढ़िया भाव में जानीपारे जे क्वेश्चंस गुड़ा एक्चुअली कौटू फ्रेम करुच्ची गोटे ऑर्गेनाइजेशन ना ने आपणकर एग्जाम गुड़ा आपणकर करुच्ची किए ना आप टीसीएस करुच्ची एवं आपणकर एबे आउर केतेटा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे करूचंदी सेमानकर आपण मोटिव जदि जानिया चाहिए जे सेमाने क्वेश्चंस फ्रेम केमती करूचंदी तले आपण धरि नेबे जे एई सोर्सेस रो एक्चुअली क्वेश्चंस आसुची। तेणु आज आ समय नष्ट न करी चलतु आरंभ करवा कौन एक्चुअली एथर सब सिस्टमटा अच्छे। देखो इकोनोमी आरंभ करवा आम है इकोनोमी आरंभ करवा इकोनोमी रू तापर आम जीवा आपणकर पॉलिटी तापर आपणकर ज्योग्राफी तापर हिस्ट्री है से सब आम कवर करवा है गोटे गोटे कर कवर करवा जो मैंने पूरा इंटरेस्टेड अच्छा भल भाव एटा सब शुणु जानतु आ देखिए पूरा इक्वाल क्वेश्चंस आपणकर आसव परीक्षा कहीं ये सब क्वेश्चंस गुड़ा आम सोर्स खोजुचु कौटू कौटू से क्वेश्चंस पचारुंट है कौन कौन क्वेश्चंस को टिके बुले दौरान क्वेश्चन टा पिला कौन हो कन्फ्यूज हो एग्जाम रे ये क्वेश्चन पढ़ी ना नहीं बोली है देखा चलते। हेलो हेलो अच्छा चलो स्टार्ट करवा। सॉफ्टवेयर आज काम करनी सॉफ्टवेयर को ये करवा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 इकोनॉमी कौन देछि आपनकर ए राइज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू ए हायर शेयर ऑफ वर्किंग एज पीपल इन ए पॉपुलेशन बुझ परछन ए राइज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू ए हायर शेयर ऑफ वर्किंग एज ग्रुप पीपल इन ए पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक डिविडेंड बोली कहते है। नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ता indexation is a method that can be used in कौन ना fixing of wage compensation। indexation is a method that can be used in fixing of wage compensation। third question subprime crisis term is associated with the event of economic recession। subprime crisis जानी आपण ए टर्म्स गुड़ा बुझी पार नथिबे हठात ए टर्म्स आसिला टिके बेसिक्स जीवा थिला बट बेसिक्स पे मु आपन को सॉल्यूशन कहबी केउंटी बेसिक आपन को बहुत भलो मिलिबा ला ए सब टर्म्स गुड़ा आपन पूरा अक्वाइंटेड हो जिवे। सब प्राइम क्राइसिस कोन सेटा आपन टर्म्स कहि देबी। नेक्स्ट क्वेश्चन द asset or assets that a borrower pledged in order to guarantee repayment of a loan is called
कोलैटरल ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपनको परीक्षा पड़ुची स्टेटमेंट इन पचार दउची तार मीनिंग कोन पचार तापर क्वेश्चन आसिला इन द 1950s द आइडिया ऑफ द सोशल मार्केट इकोनॉमी इमर्ज्ड इन कोटना आपनको जन्म देइतला तापर देखिवा आज पर द यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जोटा कि आईआईपी द मैक्सिमम वेट has been assigned to primary goods को maximum weight कौन assign करा है the growth in per capita real income from year to year serve as a key indicator from accessing economic development समझ पहले तापर क्वेश्चन the shares of the public sector and the private sector in the production of steel during 1990 to 1991 were 46% and 54% respectively 90 जे 91 ର क्वेश्चन आनी पचारुछ काई पचारुछ त निश्चित गोटे रीजंस थिबो हला रीजंस कोन आपण माने निजे जदी जानि छन कमेंट सेक्शन काई कि 90s क्वेश्चन पचारला एडा कोन पई से पब्लिक सेक्टर कथा पचारला प्राइवेट सेक्टर कथा पचारला कोन सेंती की फैक्टर थिला सही ईयर रे टिके भाबिले आपण आंसर करिवे तम से क्वेश्चंस कोड पचारुछि किछि गारंटी नै During the year 1991-1992, the industrial production recorded a growth of 0.6%. Why पुणी आसिगला 1991? ईयर टा कोन एमती अछि फैक्टर बुझ परछनी ए ईयर रे फैक्टर कोन अछि एमती जे से पचारछि जे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिकॉर्ड कोन पे हेतला भाबंतु ए क्वेश्चंस कोन पे से पचारछि नेक्स्ट the production of a paper sugar and etc comes under manufacturing activity एडा क्वेश्चन कोन पेपर सुगर या याको ने के पचार दला क्वेश्चन एडा कोन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पचारला goods that are not processed further by the producers एडा होची फाइनल goods ताको फर्दर प्रोसेस करिया पे मना करा जायछि सेटा कोन एडा होची फाइनल goods a type of goods which is non-trivial, non-exclusive and its consumer is known as free riders that is public goods आपण public goods भी terms ता जानिया दरकार जे public goods कोन a type of goods which is non-trivial, non-exclusive and its consumer is known as free riders okay next a firm has normal profit in the long run under perfect competition a farm jetta bale normal profit earn करे long run रे सेतल perfect competition में धरा जाए the principle of maximum social advantage was started by Hughes Dalton किए देथिले theory the principle of maximum social advantage was stated by Hughes Dalton in the circular flow of the income in a simple economy only two sectors exist which are हाउसहोल्ड एंड फार्म्स देखंतु मु आपनको ओपीएससी एस जोदनो आपनकर फर्स्ट क्लास नेथिली सेठी ऑलरेडी आपनको जणैथिली केते प्रकार जिंस सब अछि कोटा आपनकर कोन कहले कोटा माइक्रो इकोनॉमी कोटा मैक्रो इकोनॉमी सेही भितरे पुनी विभिन्न प्रकार फार्म्स विषय कहिथिली हला विभिन्न प्रकार फार्म्स को मन अछि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर ऊपर कहिथिली सेही जिंस रो क्वेश्चंस उठै कानला पचारला कोन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए सिंपल इकोनॉमी ओनली टू सेक्टर एक्जिस्ट व्हिच आर household and farm बुझ परछो ना नहीं ये गोटे जिंस मन रखिबे the inputs used in the production of goods or services to make an economy profit are known as factors of productions okay next jiba under the weaker section category self help groups by SSGs are eligible to avail loans under PSL but priority sector loans will ताको कोचंदी PSL okay priority sector loans next the head account ratio HCR is the proportion of a population that exists or lives below the poverty line head account ratio HCR okay next जीवा आके बाकी हमको आज 6 से 700 टा क्वेश्चन डिस्कशन करिया अछि एटा सब मन रखि तांतो हला आपण जत्ता बेले बहुत भलो कांसेप्ट उडा जानि जिवे तापरे एक एटा को आपण आउ थ दि तीन थ देखिले आपण को आईडिया आसी जिवो एटा टिके
एभव लेवल अच्छी माने जो माने बेसिक्स पढ़ुचंती बेसिक्स जो माने पढ़ुचंती सेही माने हठात ए क्वेश्चन धरि पारिबेनी कोन आज एक्चुअली पढ़ाई देले सर कि कोन एक्चुअली ए ऑनलाइन रे आनिले आज रीजन अछि ना काई ना अपकमिंग एग्जाम आपण देखिबे ए ट्रेंड को फॉलो करिवो ओसीएस रे जेमती आपण क्वेश्चन आसिला केमती टर्म्स एटी पढ़ुचंदी आपण कैपिटल रिसिप्ट्स कोन एते बड़ टर्म्स से कोन हम जानियार अछि सेट पे मो कहूची तेणु ଆପଣ ବେସିକ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ ବେସିକ୍ସ କେମିତି ବୁଝିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଜଣେଇବି କେମିତି ବୁଝିପାରିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବୁଝେଇ ପାରିବି ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ବୁଝେଇବି ବଟ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟର୍ମସ୍ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ହେଲା the receipts of the government which create liability or reduce financial asset are capital receipts ସେମିତି deal licensing of industries freedom to foreign investment and import technology are features of open economy कहीं ओपन इकोनॉमी आसिला ओपन इकोनॉमी से कौन पे से पचारला क्वेश्चन टीसीएस कहीं क्वेश्चन पचार ओपन इकोनॉमी पनी कौन पे एठी डी लाइसेंसिंग इंडस्ट्रीज पचारला पनी फ्रीडम टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंपोर्ट टेक्नोलॉजी आर फीचर ऑफ ओपन इकोनॉमी बुझिपारछन कौन थिला से विषय में ओपन इकोनॉमी को जानिया बाइंग और सेलिंग गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली इज नोन एज ई कॉमर्स आपनकर ओपीसीएस रो सिलेबस अछि ई गवर्नेंस बेली ता सहित तो भी आपनकर गोटे हमको पाठ पढ़िया पड़ो इकोनॉमी रे ई कॉमर्स माने आपनकर फ्लिपकार्ट अमेज़न हला एडा सब आपनकर मिंत्रा स्नैपडील एडा सब छी ई कॉमर्स बाइंग और सेलिंग गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली इज नोन एज ई कॉमर्स तेनो ई गवर्नेंस भी गोटे अछि ई गवर्नेंस कोन काम करे से विषय में जानिबा आगो अछि नेक्स्ट क्वेश्चन द गवर्नमेंट imposed upper limit on the price of goods or services is called price selling okay next question jiba those goods are most suited for final consumption eta hochi consumption goods those goods that are most suited for final consumption eta hochi consumption goods the father of the modern economics के आदम स्मिथ एटा डायरेक्ट क्वेश्चन आपनकर जेकोनोसी एग्जाम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एटा पचार दे पारे इजी क्वेश्चंस पचारिबो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पचारिबो मॉडरेट क्वेश्चन भी पचारिबो सब क्वेश्चंस पचारछ in terms of human resources if people cannot be used as a resource they are naturally appear as a कोन liability हला next question the industry in which goods are produced in the home of the producer एटा होची cottage industry okay the symbol of Indian rupee was designed in 2010 by D Uday Kumar एक क्वेश्चन 2010 रो क्वेश्चन जो रूपी देखुचंदी सिंबल टा के करथिले ना डिजाइन करथिले कि डी उदय कुमार एक क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट बहुत पिला विषय जानी नाहंती जे की डिजाइन करथिला बेली बुझ परछन ना नहीं द इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी ओके इंडियन इकोनॉमी होची मिक्स्ड इकोनॉमी तेणु 29 अपन टिके पढथान म 2 मिनिट अपन मानको पाको आछ
Okay, next. Sewage system, transportation and electricity come under infrastructure. Sewage system ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଟି ରେ ଅଛି, transportation ହଉଛି, electricity ଆସୁଛି, ଏଟା କଣ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ତାକୁ infrastructure ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ। Raw material and money in hand for production are classified under working capital. Raw material and money in hand for production are classified under working capital. Next question. Surely no society can surely be flourished and happy of which the far greater part of the members are poor and miserably, said by Adam Smith. ହେଲା ଟର୍ମସ୍ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ, ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ 10-12ଟା ଅଥରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଗୁଡ଼ା 2-3 ଥର ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ଫାର୍ମିଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର। ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ନୁହଁ, ସେଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ନୁହଁ, ଫାର୍ମିଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର। ଓକେ, the term alternative program in economy typically refers to long term plan. Alternative program କେମିତି ଆପଣ ଏବେ ଯଦି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ହେଲା, ପାଠ ପଢିବାରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ବୋଲି କେତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଖରେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ, ହେଲା ସର୍ଭାଇଭ୍ କେମିତି କରିବେ ମାର୍କେଟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପ୍ଲାନ୍ସ ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ, ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ ଦ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ପିପିପି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ purchasing power parity. PPP, okay, economics term re PPP stand for purchasing power parity. Okay, next, full form of SEZ, special economic zone. Special economic zone, एक question straightforward, PPP straightforward, SEZ भी straightforward question, किंतु ଯେତେବେଳେ SEZ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ଜାଣିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ moderate level ku ଯାଇପାରିବେ। next question, action of an organization or government selling or liquidating an asset or subsidiary is called disinvestment। ବୁଝିପାରିଲେ, disinvestment ତାକୁ କହନ୍ତି। ତାପରେ avoiding imports of the goods which could be produced in the country is an indicator of self-reliance economy। self-reliance economy ତାକୁ କହନ୍ତି। question, outsourcing is one of the important outcome of globalization process। globalization process ହେଲା outsourcing କ'ଣ ପାଇଁ କରାଗଲା? globalization process ହେଇଗଲା, କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା କୌଣସି ଏମ୍ପ୍ଲୟିକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାର୍ମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି, ଏଟାକୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଟା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ। ଇଟ୍ ଇଜ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ, not in India, everywhere outsourcing available। okay, next question ଯିବା। father of microeconomics is Alfred Marshall। okay, the right question। founding father of microeconomics is John Maynard Keynes। okay, John Maynard Keynes। ତାପରେ duopoly is a form of oligopoly। duopoly in a form of oligopoly ସବୁ ଆମେ ପଢିବା। a market dominated by a few large and independent firms को oligopoly कहନ୍ତି। a market dominated by a few large and independent firms, ଯେମିତି आज like Jio କହିପାରିବା। okay, ସେମିତି। forestry is an example of primary activity। निश्चित भाव में forestry, farming एटा सब आपनकर primary activity। सेमती goods produced by exploiting natural resources come under primary sector। natural resources जो अछि ताको हमें ये करी goods जो हमें काढो ताको primary sector रे काउंट करि परिबा। first economic survey of India was presented in 1950 to 1951। first economic survey हेतला। इकोनॉमिक सर्वे माने कोन, इकोनॉमी रे केमिति कोन काम चलची, लोक केते अछंती, ताकर खर्च केमिति होची, से माने कोड इनकम करछनी, से सब इकोनॉमिक सर्वे रे जणा जाय। प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस इज नोन एज इश्यू प्राइस। प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस इज नोन एज इश्यू प्राइस।
जानिबा को कोन सुगर फैक्ट्री फॉल्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर सुगर फैक्ट्री जो अछि सेटा को कोन पे सेकेंडरी सेक्टर कहंती जानिबा हम को farm equipment manufacturing activity belong to secondary sector farm equipment manufacturing activity belong to secondary sector. The input that a farm uses in the production process are called factors of production. The inputs that a farm use in the production process is called the factors of production. The sale or liquidation of asset of public sector enterprise by the government is called disinvestment. केते थरे disinvestment ता आसिलानी दुई थर आसिलानी माने आपण एबे स्टार मार्क करी रखंतु ए डिसइन्वेस्टमेंट रो कांसेप्ट ता कोन मु आजि जाय कि भलरे जानिबी डिसइन्वेस्टमेंट कोन बुझ पाइले एटा तीन थर नहीं चारि थर नहीं 100 थर ए क्वेश्चन पड़े डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कोन पे डिसइन्वेस्ट करे ला सेमिति फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बार बार पड़े फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बार बार पड़े एटा सब अपन जानिया पड़िबो नेक्स्ट क्वेश्चन डेयरी फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग आर द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर एबे प्राइमरी सेक्टर बेसी कि जानले पुणे किछ जानले बुझ पाइले नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल हु रेगुलरली मूव इन आउट ऑफ पॉवर्टी आर कैटेगराइज्ड एज चूर्निंग पोर ताको कहंती चूर्निंग पोर कोन पई कहंती जानिबा an unexpected rise in sale of a product leads to unplanned accumulation of ताको कहंती कोन इन्वेंटरी कहंती नेक्स्ट international trade theory in 1817 based on competitive advantage and specialization was developed by David Ricardo केते मसियार कथा 1817 मसियार थियोरी आनी के भी क्वेश्चन पचारुची काई पचारुची किस तो रीजन थिबो पचारुची हला डेविड रिकार्डो विषय हमें जानिया पड़िबो नेक्स्ट Queenary activity are also known as gold collar profession. Queenary activity are also known as gold collar profession. एटा भी आपनकर 3 रु 4 थरे क्वेश्चंस पडिची परीक्षा रे gold collar profession कोटा base year of the calculation of wholesale price index 11 to 12 एबे रिसेंटली एटा आपनकर कोन चेंज हेची बेली आपन जो जानि चंती मते कमेंट सेक्शन रे जणेबे कि चेंज हेची होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस ईयर कैलकुलेशन 11 12 थिला एबे कि चेंज हेची कि किछ कि करंट अफेयर से एसोसिएट अछंती कि काई कि क्वेश्चंस पचारला बेस ईयर गुटे थिला एबे रिसेंटली दुई तीनटा जिंस बेस ईयर चेंज हेची मु रिसेंटली करंट अफेयर रे जो लास्ट क्लास करंट अफेयर आपन को नेथिली सेठी मु कहिछि स्पीडी पढैतिली आपन को स्पीडी रे केतेटा ईयर रो आपन को बेस ईयर कैलकुलेशन पुनी चेंज करिचेन गवर्नमेंट ताको जानिया रछि काई कि ना सेही क्वेश्चन आपन को डायरेक्ट ओपीसीएस रे पचार दबा जे बेस ईयर थिला कोन एबे हेला कोन बुझ परछो ना नहीं ये होछि जिंस द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन 1948 फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी उटा अनाउंसमेंट हैला ओके द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी ए क्वेश्चन ता पूर्ण सेठी थिला पूर्ण आसला मिक्स्ड इकोनॉमी विषय आपन को बहुत भलो भाबे जानिया कोइ पडियो मिक्स्ड इकोनॉमी कोन ब्लू रिवोल्यूशन डील्स विथ द फिशरी माने कोन जो माछ चाष होची तांको ऊपर सब बेले ब्लू रिवोल्यूशन काउंट करा जाय द सिगरेट इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली मार्केट ओके तापरे इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन essential feature of socialist economy economic planning is an essential feature of socialist economy okay आपण 62 रु टिके पढिया स्टार्ट करन तो मु जस्ट 2 मिनिट आछी आपण मानको पुणे आउ इंपोर्टेंट फैक्टरटा कहि देबी
नेक्स्ट जिबा 62 कौन कौच 62 जिबा the percentage of women working in the primary sector of India as 2011-12 was 62.8%. प्राइमरी सेक्टर रे महिला माने 62% काम करछुंती अमेजिंग फैक्ट एबे रिसेंटली जदि किसी सर्वे हेतिबो ताको भी मन रखा पड़िबो तापरे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस hotels and restaurants and transport and communication come under tertiary sector पूराटा दे देछि ये क्वेश्चन को सीधा सीधा से पचार देला पण जे जानि थिबो tertiary sector कोन कोन अछि obviously से राइट मारी पड़ेबो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अब फाइनल गुड्स are divided into consumption good and capital goods हला final goods are divided into consumption goods and capital goods. Next question. Consumption, production and distribution are considered under economic activity. Consumption माने आमे कोन consumption करिबा production करिबा माने तयारी करिबा ताको consume करिबा एवं distribution चार्ट पकेबा एटा कोन economic activity को आज durable goods are not extinguished by immediate consumption. Okay, durable goods कोन जानि ना आमे आज एक जानिबा ड्यूरेबल गुड्स कोन रे भाई ड्यूरेबल गुड्स कोन सेटा पुनी कोन पई ना इमीडिएट कंजप्शन नै जानिबा अनडिक्लेयर्ड इनकम इज कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द पैरेलल इकोनॉमी अनडिक्लेयर्ड इनकम इज कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ पैरेलल इकोनॉमी ओके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूल्स इज एन एग्जांपल ऑफ इमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री manufacturing of tools is an example of immediate goods industry. Manufacturing of plant and machinery is an example of capital goods industry. Manufacturing of plants and machinery is example of capital goods industry. Forestry, fishing, dairy related to primary sector. सेतबे फॉरेस्ट्री विषय प्रचार थिला एबे फिशिंग को आनदेला पुन डायरी को आनदेला तीनटे जाको पुनी मिसे देला तण प्राइमरी सेक्टर जान देलो हमें एबे रिसेंटली टर्शियरी सेक्टर भी जान देलो बैंकिंग इंश्योरेंस होटल रेस्टोरेंट ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन टर्शियरी आ के संग बसे कोन करबो ना सेकेंडरी सेक्टर भी डिटेल दे दबो तण क्वेश्चंस बनना टिके मित से माने सेई गोटी पार्ट को उठे गानी के सन बके देबे क्वेश्चंस बुले देबे बुझपछो नहीं हो जिंस पुणी आसिला हिट ऑटोमेटिक मु कहू को संगे संग सेकेंडरी सेक्टर कथा कहि देला ऑटोमेटिव construction food processing and manufacturing are included in the secondary sector तले primary sector विषय जानि गलु secondary sector विषय जानि गलु tertiary sector विषय भी जानि गलु बुझिला नै एला तो क्वेश्चंस बनना जाय केमती एमती बनना जाय क्वेश्चंस हमें को गुटे पार्ट को उठे के ले हमें धरि परिबा क्वेश्चंस कोन बा नेक्स्ट बैंकिंग tourism and education are related to tertiary sector एबे गोटे एक्स्ट्रा जिंस ऐड कला एजुकेशन को ऐड कर देला बैंकिंग टूरिज्म तो कहितली बैंकिंग टूरिज्म एट कहितली बैंकिंग इंश्योरेंस होटल रेस्टोरेंट ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आ गोटे पकई देला सी टर्म्स टे कोना एजुकेशन से होचे टर्शियरी सेक्टर बुझी पाइले बुझ परछ ना नहीं जिंस ओडा tariffs makes imposed goods are expensive tariff makes imposed goods are tariff makes imported goods are expensive. Okay, next the industry which is considered as the backbone of development in general manufacturing industry manufacturing होचे backbone बुझ पाइले okay production of automatic energy is exclusively reserved for the public sector okay ए 75 टा आपण देखिचंती एबे एटा टिके पढु थांतु 80 पर्यंत हला जो माने सीरियस रीडर माने टिके पढु थांतु 2 मिनिट रास्ची एटा सब डिस्कशन करबा
ओके नेक्स्ट देखिबा आपनकर 76 multiple industries come together to make use of the advantage offered by urban center in agglomeration economy. Okay, मन रखिए बेटा agglomeration economy का कहते हैं टर्म्स टा मन रखिए. Items such as cars, clothes and chocolates which are directly sold to the consumer are privileged or consumer are private goods. Okay, private good तक कहते हैं. Cars, clothes, chocolate एटा सब आपनकर कना consumer नु direct sold करा जाए. Private good कहते हैं. रोड्स आर एग्जांपल ऑफ द पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज. रोड्स आपनकर हॉस्पिटल आपनकर गवर्नमेंट ऑफिस आपनकर सब आपनकर पब्लिक गुड्स जाए हला सर्विसेज भी जाए काइना आपन सर्विस मान प्रोवाइड करछन्दी रोड्स हला कि हॉस्पिटल्स हला एटा. नेक्स्ट प्राइमरी मोटिव ऑफ ए प्राइमरी सेक्टर एंटिटी इज प्रॉफिट. तो प्राइमरी मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर कोना ताकर होची मोटिव होची प्रॉफिट सब बड़े. नियरली 60% ऑफ द डिस्पेंसरी इन इंडिया आर रन बाय द प्राइवेट सेक्टर. Maximum investment allowed on the asset of a unit is used to define small scale industry. Okay. Next jiba hame government goods and services that are not sold directly to the consumer are public goods. Government's goods and services that are not directly to the consumer are माने गवर्नमेंट जोटा सेल करे है ना सेटा सब डायरेक्टली कंज्यूमर को जाय ना इनडायरेक्टली जाय सेटा सब पब्लिक गुड्स बिल को. Defense goods and roads are categorized as public goods. Defense goods ना सेटा सब roads सेटा सब कौन public sector public goods बिल कहती. सेल ONGC भेल आर public sector companies. Public sector company कौन मु आपनकर फर्स्ट क्लास रे कहिची OPSCS सो फर्स्ट इकोनॉमिक क्लास अपन मन को बुझेची सेल कोन पई ONGC कोन पई भेल कोन पई पब्लिक सेक्टर गुड्स अपन जाकी वीडियो देख परिबे. नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड द ट्रेड एंड कॉमर्स. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी इज कॉमनली कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी. Import substitution strategy commonly called inward looking trade strategy. The sector which contributes the highest to the national income of India is the service sector. Wholesaler keeps stock in warehouse for the retailers. Wholesaler जो ची ता पाखरे उडे स्टॉक रखिता है से जिंस से कौन करना warehouse रखिता है ताको कौन काको देना से retailer मान को दिए. At independence, about 75% of the Indian population was dependent on agriculture. 75% लोग माने agriculture पे dependent होचंती. The process of the converting raw material into finished good is related to secondary sector. Asset minus liability अपन को net worth. Okay. तापर अपन को the economic strength of a country is measured by the development of the manufacturing industry. Manufacturing industry जत्ते develop होगा country development सेत्ते होगा. A poor nation can only progress if they have a good industrial sector. A poor nation can have progress if they have a good industrial sector. Agriculture and fishing activity belong to primary sector. Silk textile is based on agro industry. Okay. 96 to 101 आपण मन टी पढी जंतु मुंडी मिनट आछी आपण मन का डिटेल बुझे देबी. Okay, next 96. An economy which both the private sector and public sector are involved is known as mixed economy. And हम इंडिया एक्चुअली मिक्स्ड इकोनॉमी रो अंडर रो एठी गवर्नमेंट भी काम करछि प्राइवेट भी काम करछि पब्लिक भी काम और समस्त काम करछि. नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी. बार क्वेश्चन पड़छि. इक्विलिब्रियम प्राइस इज नोन एज मार्केट क्लियरिंग प्राइस. ओके जानिबा कोन इक्विलिब्रियम प्राइस ऑलरेडी मु गुटे क्लास कहि देतली इक्विलिब्रियम प्राइस कोन जे देख परिबे. A system where goods are exchanged with the
other goods without the use of money एटा होची better system ओके एठी कोन हेची better system ना आपनकर जो मु गुटे मनकर गुटे सुनाटा रखिची आपण को पाखु जीबी आपण कहबे कोन ना मते दरकार छ गुटे टीणते मु ताको सुना देली सेतला टीण एते कोन लाभ कोन हला सेतमे ए सब जिंस जो प्रॉब्लमेटिक थिला बेटर सिस्टम रे सेटा को चेंज करिकि नोट सिस्टम को आसिला okay next lack of double coincidence of wants and lack of double coincidence of wants and the difficulty in carrying forward one's wealth are drawbacks of the better system निश्चित भाव में जड़े जदि गोटे जिनस चाहिला जड़े जदि चाहिला टीणटे सी पाइला सुनाटे तो डबल जिनस पाइला ना डबल ट्रिपल बहुत जिनस पाइला ना तो बेटर सिस्टम प्रॉब्लम थिला तो फुल फॉर्म ऑफ आईपीपी होची इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईपीपी रो इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ओके नेक्स्ट आमे जिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ता पूर्व आपण मन गोटे अनाउंसमेंट करछि जो माने ओपीएससी एस रो कंप्लीट प्रिपरेशन पाइपलाइन जाउछंती हला माने आपण को फाउंडेशन आरंभ करी फाइनल सिलेक्शन हला हला सेथे हम करना जनरल स्टडीज इंग्लिश ओडिया मैथ्स रीजनिंग पढौछु आपनकर फाउंडेशन प्रोग्राम रे 50% इमेज बेस 50% थ्योरी रहउची सेकंडली हमन को 3000 एमसीक्यू प्रैक्टिस कराउची फेज 2 रे आपनकर कंटीन्यूअस तापे सेरे चलथिबो तापर आपनकर 10-15 वर्ष रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब कोन कोन रहउची ताको डिस्कशन चलथिबो तापर आपण ओएमआर प्रैक्टिस बैच प्लस लाइव डिस्कशन दिया जिवो सीए आपण जेतले एग्जाम डेट अनाउंसमेंट हे जिवो पीएसएस रो ता पूर्व हम आपण को मासे थिबो आपण को 5 मिनिट आरंभ करी 15 मिनिट पर्यंत रिवीजन कैप्सूल दे दबो कैप्सूल पढी नेबे बार बार घुसी देबे आपण जिके रे निश्चित भाबे डायरेक्ट क्वेश्चन सेट सब आसीबो कंप्लीट सिलेबस कवर रहउची एग्जाम फोकस प्रिपरेशन रहउची बहुत बढ़िया बढ़िया जिंस रहउची आपनकर कोर्स भी एक्चुअली 15000 टका बट आपण 2500 टका रे बट लिमिटेड ऑफर रे जिंसटा पाउचंती जो आपण नोटिफिकेशन आसी जीवो बहुत माने रैपिड रे प्राइस टा बढ़ी जीवो जो माने इंटरेस्टेड अछंदी 9937193111 व्हाट्सएप करबे आ गोटे नेक्स्ट अनाउंसमेंट अछि जो मन पकरे फाइनेंशियल क्राइसिस रहछि नाही मो पकरे बहुत प्रॉब्लमेटिक अछि समाने इनिशिएटिव फाउंडेशन बैच नहीं परिबे जोटी कि आपन को सब कंप्लीट प्रिपरेशन करा जाउछि सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सेते अपन 6टा सब्जेक्ट रहउछि हला 6टा सब्जेक्ट रो प्राइस होछि 1200 टका जेमति जीके मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश ओडिया कंप्यूटर बट एठी गुटे ट्विस्ट कोन अछि आपण जदी पोर बैकग्राउंड रो आपण गुट्टी कि दीटा सब्जेक्ट प्रॉब्लमेटिक अछि आपण डायरेक्ट गुटे दीटा सब्जेक्ट भी नहीं परिबे कॉम्बो करी नहीं परिबे सिंगल सब्जेक्ट भी नहीं परिबे उनको जीके प्रॉब्लम अछि जीके नहीं परिबे मैथमेटिक्स प्रॉब्लम अछि मैथमेटिक्स नहीं परिबे रीजनिंग प्रॉब्लम अछि रीजनिंग नहीं परिबे मैथ जीके रीजनिंग प्रॉब्लम अछि तीनटा जक नहीं परिबे एनी कॉम्बिनेशन आपण इच्छा जने एडा होछि जो मनकर पोर बैकग्राउंड हला समन को पई एडा बहुत बढ़िया सुजोग समाने ट्राई कर परिबे एडा बहुत बढ़िया हिस्सा आछि ओके नेक्स्ट हम देखबा आपनकर एबे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स सब कोन इंपोर्टेंट जिंस सब कोन पढी थिला एग्जाम रे हला 10th क्लास टेस्ट क्लियर कौन 10th क्लास टेस्ट पेपर कौन लेक्चर जानि पानी 10th क्लास टेस्ट पेपर ठीक अछि देखिबा हमें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द नंबर ऑफ टायर इन द गवर्नमेंट इज 3 टायर था the Indian constitution was described as quasi federal by the KC where kotle konna quasi federal belly the time taken to form the constitution of the India was 2 year 11 months 18 days एटा बार बार क्वेश्चन आपन को पढिबो 3-4 तो देखिबा एटा written constitution dual government independent judiciary as feature of a federal government ro feature कोन सेठी गोटे written constitution थिबो dual government थिबो independent judiciary थिबो सेटा को federal government कहंती single citizenship strong center all India service emergency provision appointment of governor are unitary feature of the constitution देखो कोटा फेडरल गवर्नमेंट रो जिंस कोटा आपन यूनिटरी फीचर एटा सब अपन टिके बार बार बुझिल ही जानि परिबे तने जिंस आपन को बुझा जाय एनसीईआरटी बैच में आपन जस्ट एबे कहली सेठी बहुत जिंस भला भाबरे बुझा जाय जे कोटा फेडरल गवर्नमेंट रो जिंस दरकार थिला कोठी आपन यूनिटरी फीचर आसिला बेली जिंस दरकार पइला से जिंस बहुत भला बुझा जाय होला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए यूनिक ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी रो कौन ब्लेंड को कौन ना इंडियन क्वेश्चन कहती तापरे द वर्ड इन द preamble that describe India as having complete political freedom and supreme authority is sovereign
Jawaharlal Nehru moved the object resolution in the Constitutional Assembly on 13 December 1946. The Constitution Day in India is observed on 26 November. এটা भी बार बार क्वेश्चन पड़े 26 नवेम्बर मने रखंतु ओके ଏବେ ଆପଣ 10 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦଉଛି ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜଣେଇଦେବି 10 ଆରମ୍ଭ କରିକି 10 ଆରମ୍ଭ କରିକି 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ହେଲା ଦେଖିଆ କେତେ ଜଣ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ओके नेक्स्ट जीवा हमें क्वेश्चन आपनकर क्वेश्चन नंबर 10 जोटा पड़िथिला कोन थिला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज क्राफ्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंप्राइजिंग 299 मेंबर्स ओके 299 मेंबर ने के करा जायतला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज handwritten in English and Hindi the original constitution of India was handwritten by Prem Bihari Narayan Raijada एटा भी द्वितीय थर परीक्षा आपन पड़छि according to the Indian constitution the government has three organs executive legislative and judiciary okay next question the constituent assembly adopted the constitution of the India on 26 November 1949 the number of members representing the Indian princely state in the constitution assembly was केते 1946 was 93 okay representing member 93 थिले मन रखिबेटा next question the total member of the constitutional assembly 1946 was 389 of which 292 were representative of the province and 4 were from the chief commissioner province एटा भी आपन को बहुत भला बुझा जिवो ई फिगरटा केमिति बाहरला हैला एटा खाली मन रखिया पे ना जानतु the secretary of the constitutional assembly was HBR Anger okay the interim government of India was formed from the newly elected Constitutional Assembly of India on 2nd September 1946 2nd September 1946 okay next Jiva the Constituent Assembly of India was formed in 1946 okay the Constitutional Assembly of India was formed in 1946 मन रखिबे the Constitutional Assembly elected for the forming of the constitution held its first meeting on 9 December 1946 the Government of India Act 1919 fixed the tenure of the council of the state at 5 years 1919 रे फिक्स करा जायतला जे काउंसिल ऑफ द स्टेट रो टेन्यूर केते वर्ष रहबे ना 5 वर्ष पर्यंत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the permanent chairman of the Constitutional Assembly on 11th December 1946 okay 1946 okay the objective resolution was adopted unanimously by the Constitutional Assembly on 22nd January 1947 the objective resolution was adopted unanimously by the Constitutional Assembly on 22nd January 1947
The fifth session of the Constitutional Assembly was held from 14th to 13th August 1947. Fifth season जो होता Constitutional Assembly सेटा 14 to 13 August 1947 होता. Dr. Sachinananda Sinha was elected as the interim president of the Constitutional Assembly on 9th December 1946. किने Dr. Sachinananda Sinha हेतले कौन interim president. Okay. Terms like sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, equality and fraternity are mentioned in the preamble. पचारिबो क्वेश्चन preamble रे जेतिके ऑप्शन अछि सब जगह भितु दि तीनटा दबो गोटी गोटे मन इच्छा दे दबो आपण मन कर परबे नै मन रखनु करिया पड़िबो मन रखा पड़िबो जिंस टर्म्स sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, equality, fraternity एटा मन रखा पड़िबो. Okay, next. Indian Constitution came into force on 26 January 1950 हला ठीक अछि. नेक्स्ट जीवा हमें the system of government in which power is divided between the central authority and various constitutional unit is called federalism. Okay, देखो federalism कहते हैं. The father of the Indian Constitution is B.R. Ambedkar. The father of Indian Constitution is B.R. Ambedkar. The chairman of the committee on the function of the Constitutional Assembly of India was G.B. Malvankar. G.B. Malvankar. Okay. Next, the 10th session of the Constitutional Assembly was held from 6 to 17 October 1949. तेणु विभिन्न प्रकार जो आपनकर Constitutional Assembly हेतला ताको टिके मन रखा पड़े केते नंबर सेशन हेतला केते नंबर कोन हेतला मन रखा पड़िबो. नेक्स्ट, Ammu Swaminathan became the part of the Constitutional Assembly in 1946 from the Madras constituency. कि Ammu Swaminathan पचार दे पारे क्वेश्चन. The drafting committee of the Constitutional Assembly consisted of 7 members. The drafting committee of the Constitutional Assembly consisted of 7 members. Drafting committee पे 7 जन मेंबर थे. मन रखिबे. The Constitution of India was handwritten by Prem Behari Narayan Rajata. एटा ऑलरेडी पढितले पुणी आउता असला. एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा. The first meeting of the Constitutional Assembly took place in December 1946. Okay. Next question jiba. The number of representatives of princely state in the Constitutional Assembly was 93. Note karibar achi the total membership of the Constitutional Assembly hochi 1946 ke tetla 389 thile, of which 292 kona representative thile of the province and 4 were from the chief commissioner commissions. Eta mon man rakhibe 389 292 4. Okay, bujhile. Next question. Members of the Constitutional Assembly signed the Constitution of India on 24 January 1950. Sachinananda Sinha became the interim president of the Constitutional Assembly in 1946. Kanhaiyalal Maniknal Munshi described the preamble of the Indian Constitution as a political horoscope. किए कहिथिले Kanhaiyalal Maniknal Munshi describe the preamble of the Indian Constitution as a political horoscope. Eta important मन रखिबे. The first election of the Constitutional Assembly was held in 1946. Motilal Nehru, chairman, and 8 other Congress leaders drafted the Constitution for India in 1928. Motilal Nehru to आरंभ हेतला एटा आपण करो. The drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar was constituted on 29 August 1947. Next question. The proposal for the formation of a constituent assembly for the India was first proposed by M.N. Roy in 1934. The first president of the Constitutional Assembly of Independent India was Dr. Rajendra Prasad. Okay, the first vice president of the Constituent Assembly was Harendra Kumar Mukherjee. The constitutional advisor of the Constituent Assembly was B.N. Rao. The Union Ministry of Social Justice and Empowerment declared November 26 as the Constitution Day in 2015. In 2000 ଆପଣଙ୍କର 14 ରେ ଆସିଲେ ମୋଦି गवर्नमेंट नवेम्बर 26 2015 रे कॉन्स्टिट्यूशन डे हो बोली की डिक्लेयर की कले ना आपनकर यूनियन मिनिस्ट्री एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट केबे कॉन्स्टिट्यूशन डे नवेम्बर 26 मने रखिबे हला बार बार परीक्षा आछी.
बुझे Dr. B.R. Ambedkar, known as the father of Indian Constitution, was the chairman of the drafting committee. The province having the highest representation in the Constitutional Assembly of India on 13 December 1947 was the United Province. Okay. The Constitution of India was adopted on the 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950. ବୁଝିପାରିଲେ ଆହୁରି ଅଛି ଦେଖିବା ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ପଡୁଛି ଖାଲି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଅଛି କୋଉ ଜିନିଷ ସେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏକ୍ସାମିନର ହେଲା single citizenship integrated judicial system appointment of the governor is a unitary feature of the constitution ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଇ ତିନିଟା ସ୍ଲାଇଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ୟୁନିଟାରୀ ଫିଚର୍ସଟା କ'ଣ ସେ ଭିତରେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏନସିଆରଟି ବ୍ୟାଚ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏନସିଆରଟି ବ୍ୟାଚ୍ କ'ଣ ଅଛି Federalism is a system of government which its powers have been divided between the center and state. Dual government, division of power and written constitution are federal feature of the constitution. K.C. Where described the Indian constitution as quasi-federal. The Constitution Assembly adopted the national anthem Jana Gana Mana on 24 January 1950. The Constitutional Assembly ratified India's membership of the Commonwealth in May 1949. According to the Indian Constitution, the government consists of three organs. Already I said three organs. The Constitutional Assembly adopted the national song Vande Mataram on 24 January 1950. देखंतु ये होची national song, ये होची national anthem. Which was a national song, national anthem. The national flag was adopted by the Constitutional Assembly on 22nd July 1947. Okay. The number of female members in the Constitutional Assembly was 15. 15 जन थिले. The chairman of the House Committee of the Constituent Assembly was B. Pattabi Sitaramaiah. Okay. B. Pattabi Sitaramaiah से कौन थे chairman of the House Committee थे the chairman of the Credential Committee of the Constitutional Assembly India was Alladi Krishna Swamy Iyer. Okay, Credential Committee रो के थे chairman थे के Alladi Krishna Swamy Iyer मोने रखूँ जोड़ा सब अपना important पढ़ी करे. The Constitutional Assembly was recognized by Section 8(1) of the Indian Independence Act 1947. Dual citizenship is a feature of federal government. The directive principle of the state policy were described as the noble feature of the Constitution of India by B.R. Ambedkar. A form of constitution that contains the feature of the both unitary and federal constitution is called quasi-federal. The first Constitutional Assembly was held on 9 December 1946. The plan through which the Constitutional Assembly was created is the Cabinet Mission Plan. Okay. ये सब क्वेश्चन गुड़ा आपनकर बार बार क्वेश्चन आपनकर परीक्षा रे पडुची तेणु आपण मान कोडा सब जानिबार आवश्यकता रहिची. ओके. The first nominated deputy chairman of the Constitutional Assembly was Frank Anthony. एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन डा फ्रैंक एंथोनी बहुत पिला जानि नथिबे डेप्यूटी चेयरमैन की हेतिले बोली फ्रैंक एंथोनी माने क्वेश्चन आपण नोट डाउन कोन देना. The chief draftsman of the Constitutional Assembly during the drafting of the Constitution was S.N. Mukherjee. The lengthiest written Constitution of the world is the Indian Constitution. The Hindi version of the original Constitution was calligraphed by the Basant Krishnan Vaidya. देखंतु ए क्वेश्चंस केने आसीला हिंदी वर्सन को पुणी कैलिग्राफ करछन से बसंत कृष्णन वैद्य ए क्वेश्चंस प्राय आपण को कोन से इनसीएट मिलिबनी एट मिलिबो क्वेश्चंस काई पचाउ छेडा. The structural part of the Indian Constitution largely divided from the Government of India Act 1985. The handwritten Constitution was signed on 24 January 1950 by the 284 members of the Constitutional Assembly, which included 15 women. 15 जन सेमित women थिले. The act regarded as the precursor of the Indian Constitution is the Government of India Act 1935.
procedure. Okay. The right to the constitutional remedy was termed by the soul of the constitution. Remedy was termed the soul of the constitution by B.R. Ambedkar. The Constitution of India was signed by Dr. Rajendra Prasad on 24 January 1950. Okay. এটা ଆପଣ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ 84 ରୁ 82 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସବୁ ଜିନିଷ କହିବି। ओके नेक्स्ट देखिबा The term secular was added to the preamble of the Indian Constitution in 1976. The largest democratic country in the world is India. The first temporary chairman of the Constitutional Assembly was Sachidananda Sinha. Constitution Day of Samvidhan or Samvidhan Divas is celebrated on 26 November. Okay, the idea of the Constitutional Assembly for the India was put forward for the first time in 1934 by the M.N. Roy. Quasi-federal separation of power and fundamental right are some of the key features of the Indian Constitution. The kind of the justice mentioned in the preamble of the Constitution of India is social, economic and political. The meaning of the word republic in the Indian Constitution is elected head. Liberty of the thought, expression, belief, faith and worship are mentioned in the preamble. Next देखिबा The Constitutional Assembly was formed on the recommendation of the Cabinet Mission which visited India in 1946. According to the preamble of the Indian Constitution, India is a republic. A set of written rules accepted by all the people living within the country is called the Constitution. The Indian Constitution is a sovereign, socialist, secular, democratic republic with a parliamentary system. The terms sovereign, justice and fraternity are included in the preamble. All the democratic countries are most likely to have a constitution. Bicameral legislature is a federal feature of the Constitution. The objective resolution introduced on 13 December 1946 was proposed by Pandit Jawaharlal Nehru. The term liberty, equality, justice and fraternity are mentioned in the preamble. The chairman of the Finance and Staff Committee on the Constitutional Assembly was Rajendra Prasad. Okay. The president of the order of the Business Committee of the Constitutional Assembly was K.M. Munshi. The fundamental law of a country that sets out the framework and principal functions of various organs of the government is called the Constitution. देखो केते जगह रे केते प्रकार क्वेश्चंस को बुलेके से कॉन्स्टिट्यूशन दे दउची इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन देखो क्वेश्चंस कौन से बुलोच क्वेश्चन देखछु ना नहीं पुणी कॉन्स्टिट्यूशन भीतर पुणी आउरी केते जिंस ताक बताउची तेणु क्वेश्चंस को पढ़िला बेलको आपन धरिया पड़िबो जे से कोन जिनिसटा को चाहूची पचारिया पई तेणु आपन को गुटिए बही पढ़ी देले समस्त कोन गुटिए बही पढ़ी देले आपन को पको होई जिवे सेम कहि परिबेनी गोटे दुटा बही अलगा भी पढ़िया पड़िबो। द
The legal advisor to the Constitutional Assembly during the drafting of the Constitution is B.N. Rao. The preamble of the Constitution of India provides the liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Okay. The first session of the Constitutional Assembly was held on 9 December 1946. The original Constitution of India was written by the Prem Bihari Rajada. The introductory statement of a constitution included is its region and giving values is known as preamble. Preamble रे भी दुई तीन डेफिनेशन 2000 अच्छे बुझिपारे. नेक्स्ट आमे जिबा आपणकर हिस्ट्री को जिबा ता पूर्व आपण मान का अनाउंसमेंट जो माने आपण मानकर ओपीएससी एस जो न्यू रिक्रूटमेंट आसीबो ता पई प्रिपरेशन एबेट करे पई जाउचंती जो माने आपण माने न्यू अछंती न्यू इन द कॉम्पिटिटिव सेक्टर समान का बहुत बड़े जिस पांचटा पेज रे हमें आपण प्रिपरेशन करिवो जो मन का फंडामेंटल दरकार अछि फाउंडेशन दरकार अछि समान को फाउंडेशन प्रोग्राम रे आपण को 50% इमेज 50% आपण को नोट्स दिया जिबा 50% आपण को समरी दिया जिबा ला ता सहित 3000 एमसीक्यू प्रैक्टिस करा जिबा प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करा जिबा तापर ओएमआर प्रैक्टिस करा जिबा लाइव डिस्कशन बैच भी रहबा ता सहित आपण को लास्ट रे एग्जाम आसीबो आपण को 5 ରୁ 15 मिनिट पर्यंत रिवीजन कैप्सूल दिया जिबा आपण खाली सुन सुन मन रखिबे त बहुत बढ़िया सिस्टम अछि आ प्राइस एक्चुअली आपण को 15000 टका कोर्स भी बट हमें स्पेशल ऑफर रे मात्र 2500 टका रखिछु जीवन का इंटरेस्ट अछि 9937193444 नंबर व्हाट्सएप कर परिबे. ओके नेक्स्ट रहिला जो मन को बेसी पैसा नहीं से किसी लिमिटेड सब्जेक्ट कवर करने अन्य सब सब्जेक्ट हो पार्टी से चाहे इनिशिएटिव फाउंडेशन बैच नहीं पारे जो थे कि जीके मैथमेटिक्स रीजनिंग इंग्लिश ओडिया कंप्यूटर पढ़ा जाऊँगी आपर 200 टका देखिए आपण सब जगह सब्जेक्ट नहीं पारे कम्बो हो 1200 टका ना आप चाहिए इंडिविजुअल गोटे गोटे चैप्टर भी गोटे गोटे सब्जेक्ट भी नहीं पारे आइदर कम्बो भी मिसेक 2-4टा करके नहीं पारे आपको सुविधा हो है तेणु यहाँ जो मान पाखे बेसी पैसा नहीं से यहाँ गोटे बहुत बढ़िया सिस्टम अणा जा. ओके एबे आमे जिबा आपनकर हिस्ट्री को जिबा हिस्ट्री जिबा आमे हिस्ट्री आपण प्री हिस्टोरिक एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन आपनकर पढुची आपण परीक्षा रे पीओ रे बहुत पढिची क्वेश्चन देखियो आमे कोन कोन अछि हला अत्या 2 मिनिट टाइम देंतु मो टिके चार्ज कर दोची आपनकर लैपटॉप तापर आपण को स्टार्ट करछु.
ओके नेक्स्ट देखिबा Kuldiwa is a Neolithic site in Uttar Pradesh. The Harappan city that was divided into three parts: Citadel, the middle town, and the lower town of Dholavira. The bronze statues of Harappan civilization were made using the lost wax casting method. The Paleolithic age is divided into three stages. The Harappan structure, which had a thin lining of bitumen to prevent the seepage of the water, is the Great Bath. The term citadel and lower town are associated with the Harappan civilization. A terracotta log has been found at a Harappan site presently located Banwali, जोटा कि हरियाणा पाखरे. Question number 8. The dockyard-like structure found at the Harappan site is named Lothal. The statue of the priest king has been found in Mohenjo-daro. Evidence of a log field has been found in Kalibagan. The dancing girl found at the Mohenjo-daro is made of bronze. An inscription comprising 10 large-sized signs of the Harappan script was found at Dholavira. Purvo masks were found in the Harappan site of Kalibagan. A Harappan city was divided into three parts, with each part surrounded by the massive stone walls of Dholavira. The Great Bath of the Mohenjo-daro was made watertight with a layer of the natural tar. The ancient Harappan site of Lothal is located in the present-day Indian state of Gujarat. Remains of the Harappan civilization at the Lothal site were discovered by S.R. Rao. Pit houses dug into the ground with steps leading into them were found at Burjum, Kashmir है. Khirsara, Balakot and Lothal were port town of the Indus Valley civilization. बालाकोट रे आक्रमण होइतला मन अछि बालाकोट सेट. Houses of the Indus Valley civilization generally had rooms built around the courtyard. Okay, एटा सब आपनकर ancient history but आपनकर पढुछि परीक्षा रे हला. The Mesopotamian people of the Tigris Euphrates valley called the Indus Valley civilization Meula. Okay, the father of Indian archaeology is Alexander Cunningham. Alexander Cunningham became the Director General of the Archaeological Survey of India in 1861. Next, fire altar of Harappan culture were found at Kalibagan and Lothal. The Paleolithic cultural site named Daimabad is located in Maharashtra. Daimabad is in Maharashtra. Dholavira, Rangpur and Amrapura archaeological sites are located in Gujarat. The archaeological site of Sutrodoka is situated in Gujarat. The Harappan site Amiri is located in Sindh, Punjab. ତେଣୁ କୋଉଠି କ'ଣ ସାଇଟ୍ସ ଅଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା. Kalibagan, a Harappan site on the bank of river Ghaggar, okay, was discovered in 1951 by the Amlanand Ghosh. Amlanand Ghosh द्वारा କ'ଣ ଘାଗର ନଦୀ ପାଖରେ Kalibagan Harappan site ମିଳିଥିଲା. Evidence of a large open area with terraced stand identified as stadium is found in the Harappan site of Dholavira. Okay, next देखिबा Banwali, an archaeological site in the Haryana, was excavated by S.R. Bist. Bhimbetek in Madhya Pradesh is a Paleolithic site. Kalibagan, Balathan, Karanpura and Barar sites are located in Rajasthan. Lothal was a famous port town during the Indus Valley civilization. Sutrotoda is a Harappan site in Gujarat was discovered in 1964 by J.P. Joshi. Evidence of demonstration of dogs in ancient India was found at Burjohom, जोटा Kashmir अछि. The northernmost site of the Indus Valley civilization is Manda. The Gola Dhora site related to Indus Valley civilization is located in Gujarat. Gola Dhora.
The skull of a Homo erectus was found in the Paleolithic Indian site of Hatonora. Hatonora पाइले Homo erectus. तापर Charaka Samhita was written by Maharishi Charaka. Another name of the Indus Valley civilization is the Harappan civilization. Next, the largest Indian site of the Indus civilization होची राखीगढ़ी जोटा कि हिसार हरियाणा अच्छी. The cave of the Bhimbetek were discovered by Dr. Vishnudhar Vakkanarkar. The rock cave in the India where most paintings were found in Bhimbetek. Bhimbetek रे इतला ना ना. The Catholic age was known as for the Copper Age. The evidence of the domestication of the animal in the Mesolithic period is found in Bagor, जोटा कि राजस्थान अच्छी. Cattle breeding was started in the Mesolithic period. The ceramics similar to the Anarta tradition were first reported from Sutkotoda. Okay, reported in from Sutkotoda. The Mesolithic site Paisara is located in Bihar. Paisara is located in Bihar. The Livalius technique referred to making prehistoric flake tools. Several large cisterns and reservoirs have been found in the citadel and lower town areas of the Harappan city Dholavira. Okay. Lothal, a dockyard located in Gujarat, was discovered by S.R. Rao. The terracotta model of a plug was found in Banwali, Haryana. The citadel and great bath was situated in Mohenjo-daro. The largest Harappan site in India is Rakhi Gadi, Koti, Haryana. Taimabad, a prehistoric site located in Maharashtra. Tapre Mohagara is the prehistoric site providing evidence of the cattle rearing is located in the Uttar Pradesh Mohagara. Tapre Kaldadiva is an archaeological site located in Uttar Pradesh. Tapre Burjohom and Gupharkal are the Neolithic site located in Kashmir. Alamgirpur site of the Indus Valley civilization is located in Meerut, Uttar Pradesh. Great Bath, bronze dancing gun, and seal of Pasupati Mahadev are found in Mohenjo-daro. The ruins of the Mohenjo-daro and Harappan shows that they were magnificent and well-planned merchant cities. The longest inscription found on a Harappan seal consists of 26 signs. The animal motifs found on the cylindrical seal of the Indus region include a humped bull. The first astronomical observatory of the Harappan civilization was found at the Dholavira, Gujarat. Okay, 66 ରୁ ଆମେ ପୁଣି start କରିବା ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ.
66 question. Large quantity of the ostrich eggshells were found during the Paleolithic period in India at Patane, Maharashtra. Okay, next the Iron Age is named for the adoption of the iron metal for the tool in weapon because it mostly replaced bronze. In Nothal, the drain of the drainage system were made of the burnt bricks. Port and the dockyard, single citadel, rice husk and cheese, जोटा कि game कहते were found in Lothal. Pottery was first traceable to the Neolithic period. The first and longest part of the Stone Age was Paleolithic period. So मन रखा पड़े अपन को. Human made stone tool in the Paleolithic period. Next question is the period between the Paleolithic and the Neolithic period of Stone Age was the Mesolithic. Hand axe, choppers and cleavers were the tools of the Paleolithic period. The new Stone Age is also known as the Neolithic Age. Weapons made of the bones were found in the Burjahom and Chirant. Okay, Burjahom, Chirant and Mehergarh were the site of Neolithic site. The Neolithic site of Chirant is situated in the Bihar. Burjahom is located in the Kashmir. Dholavira is located in the Gujarat. Dholavira was discovered in 1960 by J.P. Joshi. The first astronomical observatory of the Harappan civilization was located in the Dholavira. Dholavira is situated on the banks of the river Luni. Water harvesting system, river, water reservoir, dams and embankments were found in the Dholavira. Underground drainage system and systematic town planning were found in the Indus Valley civilization. The Indus Valley civilization was a Bronze Age civilization. The Great Bath and used for the rituals and was found in Mohenjo-daro. In India, the practice of the erecting megalithics began about 3000 years ago. Okay. Nidasakla, Hanmasagar, Junapani and Hire Benikal are megalithic sites. Mehergarh is situated in the Baluchistan. Baluchistan apanagar Pakistan अछि. In 1974, Mehergarh was discovered by Jean Francisco Jerez. Uski Paleolithic site is located in the Kuti, Yadgir, Karnataka. Mohenjo-daro belonged to the Indus Valley civilization. Okay, Mohenjo-daro was excavated by R.D. Banerjee in 1922. Eta pade barabar parikha dekhitebe. Cotton was probably grown on the Mehergarh from about 7,000 years ago. Harappan city exists in the Indus Valley civilization. A Harappan town was located on Khadir Beit in the Rann of Kutch, Dholavira. Bhimbetka, a Paleolithic site, is located in Madhya Pradesh. Harappa city, Jognakhera, is located in Kurukshetra, Haryana. Ostriches were found in India during the Paleolithic age. Jadated stone was found in the site of the Deojali Handing. Kattal Hook was one of the most famous sites of the Neolithic period. In the Harappan site, the higher and the smaller western area was called the citadel. Metal was used to make weapons and tools in Harappan city, primarily copper. The Harappan brought gold from the present day Karnataka. Okay. तापर आम जा जोग्राफी को पूर्व आनाउंसमेंट जो मैंने ओपीएससीएस 2026 कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते से मैंने आमर कोर्स नहीं पारे जो कि पेज 1 2 3 4 5 आम पाठ पढ़ाऊँ फाउंडेशन रे 50% इमेज 50% थ्योरी रे आपन रहिबो
एमसीक्यू 3000 प्रैक्टिस करा जिवो साइमल्टेनियसली तापरे तांकर प्रीवियस एमसीक्यू भी तांको दिया जिवो केन कोन समान करि परछन ना नाही अंडरस्टैंडिंग पई तापरे सन ओमर प्रैक्टिस बेस दिया जिवो लाइव डिस्कशन करा जिवो लास्ट को आपन जो एग्जाम पकाई थिबो तळक आपन को 5 मिनिट हम करी 15 मिनिट पर्यंत वीडियो किछि दिया जिवो ऑडियो किछि दिया जिवो जोटा आपन सुनि सुनि आपन मन रखिबे आपन मन पई बहुत इंपोर्टेंट रहइबो जोमान चाहउछनी 9937192411 व्हाट्सएप करिवे कोर्स फी अछि एक्चुअली 15000 टका बट स्पेशल ऑफर 25000 टका मिलछि जून आपन नोटिफिकेशन मारि जिवो प्राइस एक्चुअली 15000 पड़ेबो एबे लिमिटेड पीरियड पे अछि जोमान चाहउछन नै परिबे ता सर जोमान को फाइनेंशियल बैकग्राउंड प्रॉब्लम अछि समान चाहिले एनी इट इज सब जगह पाठ आपण पढ़ी पारे जीके मैथमेटिक्स रीजनिंग इंग्लिश ओडिया कंप्यूटर 1200 टका पढ़ी पारे सब जगह सब्जेक्ट प्राइस 200 टका रही चाहिए आप टोटाल नहीं पारे ना इंडिविजुअल चाहिए गोटे सब्जेक्ट नहीं पारे जीके प्रॉब्लम अच्छी जीके नहीं पारे मैथमेटिक्स प्रॉब्लम अच्छी मैथमेटिक्स नहीं पारे रीजनिंग प्रॉब्लम अच्छी रीजनिंग नहीं पारे कम्बो करके 2-3टा भी नहीं पारे ना सब जगह नहीं पारे आपन इच्छा किंतु किसी बाध्यबाधकता नुह ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट आम देखा आपणकर ज्योग्राफी ओके ज्योग्राफी मु केवल आप पढ़ी पढ़ी जाऊँगी आप खाली शुणी शुणी जातु है कहीं एटा सब आपंकर परीक्षा पड़ी एवं बार बार पढ़ो ही पड़ो एक क्वेश्चन आम एमती एटा सब डिजाइन करके सब आपको वन लाइनर कर देचु आपंकर बार बार पढ़ुवा क्वेश्चन को आम डिस्कसन करूँ तेणु एवं ज्योग्राफी मुझे पूरा स्पीड पढ़ी पढ़ी जाऊँचे खाली आप शुणी शुणी जातु ज्योग्राफी पर आप साइंस टेक अच्छी कंप्यूटर भी अच्छी बहुत जिन अच्छी जल्दी आमको साढ़िया को पड़ो दीटा सुधा ओके Question number 1. Indian state surrounded by Bangladesh on the three sides Tripura. Three sides आपण कोड ना त्रिपुरा तो तीनटा साइड रे बांग्लादेश अछि बुझ पाइले तणो जदि पचारि को स्टेट ता सेटा आपणकर त्रिपुरा इंडिया शेयर्ड इट्स लार्ज इंटरनेशनल बॉर्डर around kete 4096 km with the Bangladesh length of the Indian border with the Afghanistan 106 km सब to come border security force guards the border of the India with Pakistan and Bangladesh line divided India and Pakistan red cliff line the name of the border line between India and Bangladesh red cliff line the capital of Maldives hochi Malé the capital of Cambodia hochi Phnom Penh the capital of the Bhutan hochi Thimphu Indian state that share the maximum border with Myanmar सेटा होची अरुणाचल प्रदेश हेता मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करछि इंडियन स्टेट तापरे एठी जो क्वेश्चन पचारला तीनिटा आपनकर कोन सराउंडेड बाय बांग्लादेश थ्री साइड सेटा होची त्रिपुरा एटा होची अरुणाचल प्रदेश मन केबे द गवाड कोन गवदार पोर्ट इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी इन पाकिस्तान आपनकर ए पोर्ट आपन देखि बिथिबे IB67 मोटे कोन फिल्म थिला एते से गवाड़ फोर्ट विषय अपन देखतिबे बहुत भल इंफॉर्मेशन देखिबे केतबे नेक्स्ट क्वेश्चन द कांसेप्ट ऑफ ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इज ओरिजिनेटेड इन भूटान बुझ पहले कोड ना अपन भूटान रे छेडा जो माने चैनल देखछन निश्चित भाव लाइक से सब्सक्राइब करनतो ओके The concept of gross national happiness was originated in Bhutan, the smallest neighboring country of India area-wise is Bhutan. The Phulabri is a coal deposit basin in Bangladesh. तापरे Gangker Pensum, the highest unclimbed mountain in the world, is located in Bhutan. देखो जने को लेवल रो क्वेश्चन से पचारलानी इंडिया नेबर को टिके दुगुजी पचार दोजी द कोस्टल नेचुरल बीच इन द वर्ल्ड Cox's Bazar is Bangladesh. Okay. The McMahon line is between India and China. Ganga water sharing treaty 1996 at the Farka was signed between India and Bangladesh. Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram share boundary with Myanmar. अरुणाचल प्रदेश अच्छी नागालैंड अच्छी मणिपुर अच्छी मिजोराम अच्छी म्यांमार सहित वेस्ट बेंगल मेघालय आसाम त्रिपुरा मिजोराम बांग्लादेश सहित कैपिटल ऑफ मालदीव्स माले इंडिया शेयर द सुंदरबन फॉरेस्ट विथ बांग्लादेश देखो सुंदरबन फॉरेस्ट क्या सहित पुणी शेयर करछि बांग्लादेश सहित मन रखंतु 8 degree channel separate Minicoy Island India from Maldives India share most of the western border with Pakistan. Western border जो अच्छी पाकिस्तान से तो शेयर करे. Total countries in the Indian subcontinent होची 7. Capital of Afghanistan होची Kabul. Currency of the Bangladesh होची Dhaka. The Sino-Indian border is divided into 3 sectors. The line that separates Pakistan and Afghanistan, Durand line. The line that separates Arunachal Pradesh and Tibet होची China McMahon line.
The Indus Water Treaty was signed between India and Pakistan 1960. 1960 रे थिला. Karakoram Pass was located between India and China. In 1505, Sri Lanka was discovered by Portuguese. The main religion of Myanmar is Buddhism. Myanmar religion called Buddhism. Okay. Okay. The highest mountain in Bhutan is Gangkar Pensum. India share the longest boundary with Bangladesh 4096.70 km. India shares its land border with 7 countries. Length of the Indian border shared between India and Pakistan is 3323 km. India shares the shortest boundary with Afghanistan 106 km. Thimphu is the capital city of Bhutan. Nepal is located in Himalaya mountain ranges, Central Asia. India is a land border of about 15106 km. India has a coastline of including Iceland territory of 7516.6 km. Rajasthan, Punjab, Gujarat, Jammu Kashmir, Ladakh share border with Pakistan. Rajasthan, Punjab, Gujarat, Jammu Kashmir, Ladakh. Okay. The Red Cliff Line is the boundary between India and Pakistan. Okay, next. Durand Line is the boundary between India and Afghanistan. Line of control LOC is a border between India and Pakistan. Line of actual control is a border between India and China. Meghalaya shared its border on the north and east with Assam. Meghalaya shared its border on the south and west होची बांग्लादेश. ताले हमको भल्ले जाने अछि मेघालय टा केमती कोन करछि. ओके. तापरे द इंडियन स्टेट which shares its border with China, Nepal and Bhutan is Sikkim. West Bengal is the only Indian state to share its border with Sikkim. The Jaffna Peninsula, known for its cultural heritage and Tamil population, is located in northernmost part of Sri Lanka. Myanmar changed its capital from Yangon, Rangul जोटा कहउछनी, to Naypyidaw in 2005. The 1.8 long Feni bridge connect between India and Bangladesh. तापरे चित्तरगंग is a seaport of Bangladesh. चित्तगंग Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal, Sikkim and Bihar border with Nepal. Okay. तापरे India shared its land boundary with China, Nepal, Bhutan in the north. Odisha, Jharkhand, Bihar, Sikkim and Assam share with border with West Bengal. The 24th parallel line जोटा कि सर्किट डिवाइड करूची इंडिया एंड पाकिस्तान को. ओके. Durand line between Pakistan and Afghanistan. India has Kalpapani and Sutra territory dispute with Nepal. Kalapani और Susta Kalapani. Okay. Nepal is located in North India. Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Sikkim shared a boundary between Nepal. Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh share a boundary with China. Sikkim, West Bengal, Assam और Arunachal Pradesh share boundary with Bhutan. ओके. ये जो सोलर सिस्टम डा अछि हमें ई चैप्टर काली आपण मान को ये करिवो पढै देबो आपण को YouTube रे फ्री ऑफ कॉस्ट पढै देबो हला. तापरे हमें एटा आज डिस्कशन करबा काइना बहुत फैक्ट्स अछि. एटा टाइम टेकिंग लागिवो आ बुझिबारे कष्ट होइजबो जदी असुविधा तेणु इमेज देखले बुझा पड़िबो. एटा तेणु हमें बेजिबा आपणकर साइंस टेक्नोलॉजी विषय साइंस टेक्नोलॉजी एवं कंप्यूटर हमें आज सार दबा. ओके. नेक्स्ट क्लास में आपणकर सही सोलर सिस्टम को आरंभ करिबा. ओके. नेक्स्ट देखिबा हमें Pinaka is a multi-barrel rocket system developed by DRDO. A short range surface-to-air missile developed by DRDO is Trishul. An Indian short-range ship launched ballistic missile is Dhanush. A supersonic cruise missile developed by Russia NPO जोटा कि Messiono Stenonica जोटा कि NPOM and DRDO is BrahMos. The eco-friendly rocket Angara was developed by Russia. The first vehicle to soft land safely on the surface to the moon was Luna 9. The nickname given to the ISRO rocket GSLV Mk3 is Fat Boy. The Nirbhay missile has a strike range of 1000 km. India's longest range ballistic missile is Agni 5. Astra is an air-to-air missile developed by DRDO.
The missile named after the Indian river Brahmaputra and Russian river Moskva is BrahMos. The first surrounding rocket Nike Apache was launched by the India in 1963. Prithvi 2 is a ballistic missile developed by DRDO. India's first commercial underwater drone is iRope Tuna. The range of the supersonic Akash missile is around 25 km. Surya, Agni and Prithvi are land-based ballistic missiles. India's first industrially designed and constructed ballistic missile submarine Tanauchi SSBN in INS Aryant. India's third generation fire and forget anti-tank guided missile is the NAG missile. Okay. The range of the BrahMos less Sukhoi 30 at a time without mid-air refueling is 1500 km. Zubastro is successfully tested in July 2020. An intercontinental ballistic missile ICBM has a range of greater than 5500 km. A third generation anti-tank missile intensely developed by the India is the NAG missile. Drubastro is a missile developed by DRDO. An intercontinental ballistic missile has a range of greater than 5500 km. A third generation of anti-tank missile intensely developed by NAG missile. Agni is a nuclear capable range ballistic missile. A short to medium range surface to an air missile system is Akash. The place from where DRDO often test missile in India is Wheeler Island. Their alternative name Dr. Abdul Kalam Island. India's surface to surface short range ballistic missile is Prithvi. Okay. The missile Prithvi was first test fired on 25th February 1988. The Terminal High Altitude Air Defense Third is an American anti-missile system. Medium range surface to air missile is Akash. Okay. The missile man of India is Dr. APJ Abdul Kalam. The missile woman of India is Thesey Thomas. The Thumba Equatorial Rocket Launching Station TERLS was established in 1963. The Integrated Guided Missile Development IGMD was started by DRDO in 1983. BrahMos is the name of a short-range supersonic cruise missile. India's first indigenously anti-radiation missile is Rudram. The combination of satellite GSAT-40 of ISRO was launched from Kourou, French Guiana. The INSAT 1B was launched in 1983. PSLV Orbital Experimental Module POM is associated with ISRO.
ओके नेक्स्ट देखिबा कौन थिला द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होची आकाश द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन ऑफ द टेसी थॉमस ओके एड़ा तो कहि देली India's first India's anti-radiation missile is Rudam. The communication satellite GSAT-24 of ISRO was launched from the Korur French Guiana. Okay. तापर PSLV orbital experimental module जोड़े कि POM is associated with ISRO. तापर the height of the geostationary orbit is 35,786 km. ERS-1, Nimbus 7 and Iconos. Okay, satellite are sun synchronous. ISRO launched its first Earth observation satellite EOS-4 by rocket PSLV C-52. India developed an independent regional navigation satellite system called NAVIC. Polar Satellite Launch Vehicle PSLV C-52 was launched with EOS-4 satellite at Sriharikota. To enhance India's surveillance in the Indian Ocean region, DRDO developed the Sindhu Netra satellite. Okay, देखिए तापरे computer last. The first digital computer built using the integrated circuit is known as IBM System 360. Based on its memory size and performance, the type of computer known as big iron are mainframe computers. Example होची कौन Univac, ENIAC, EISC, तापरे IBM Jet and Fujistasu server. The first mini computer was EDP-8. There are three basic categories of the physical equipment in microcomputer hardware, that is system unit, output input unit and secondary storage. Param is an example of supercomputer. The Param 8000 was released in 1991. Param CD referred to artificial intelligence supercomputer. Okay. Notable supercomputer in the world 7 housandi Fakaku Japan, Summit USA, Sierra USA, Selena USA, Frontera US, Sunway, Thinlota China and Tianetu China. तापर सुपर कंप्यूटर इन ने होची ऐरावत परम सिद्धि AI प्रत्युष मिहिर सरसरत आदित्य कलर ब्लूजम एंड परम युवा 2 उन्न केवड़ा okay the Apple monochrome logo was introduced in 1998. The developer of Param 1000 in CDAC Pune. The first mechanical computer designed by Charles Babbage was called Analytical Engine. If Bill Gates had his way, Windows OS would have been called Interface Manager. The name of the first electronic digital computer in the world is ENIAC. The microcomputer designed for use by one person at a time is a personal computer. Desktop computer, laptop, notebook and tablet are type of personal computer. Okay. The computer used to control air traffic, radar for national defense and hybrid computers. Thermometer, speedometer, analog clocks, seismometer, voltmeter and flight simulator are example of analog computer. An electrocardiogram machine is an example of a hybrid computer. An hardware or software system with a biological component or biological system that function like a software or hardware is referred as a weightware. Weightware special refer to the human brain. Important मन के बेटा weightware विषय कोड़ी जानना तो यहाँ बड़ा. Desktop computer, laptop computer, tablet and smartphone are different types of microcomputers. Computer used in hospital measure the heartbeat of patient is a hybrid computer. Computer used in climate research and weather forecasting are the supercomputer. The father of supercomputing is Seymour Cray. The first analog computer was designed by Samarendra Kumar Mitra. First analog computer के करता Samarendra Kumar Mitra. Slide rule, differential analytics and cast clocks and type of analog computer. India's first supercomputer is Param 8000. Mac is a type of personal computer made by Apple. A computer that uses continuously
changeable entity like mechanical, electrical, hydraulic, etc. is an analog computer. And mercury thermometer is an example of analog computer. A computer that uses register for flow of continuous signal is an analog computer. Digital computer are system machine that use the binary number system which has two digits 0 and 1. A computer that combines a large amount of memory RAM and multiple processor is a mainframe computer. A single user high performing computer created for a technical and scientific application is a workstation. Digital computers were developed in the USA. Example of the digital computer which included calculators, digital clocks, weighing machine, automobiles, smartphones, personal digital assistant and stopwatch. Generation पढ़िबा कोन ए an example of third generation programming language होची COBOL. Senc, ENIAC, IDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 605, 650 are example of first generation computer. The second generation computer were based on transistor. IBM 370 is an example of third generation computer. Okay. Stack जोटा कि electronic delay storage automatic calculator was from which generation of the computer past मन रखते बेटा तापर IDVAC जोटा कि कहले ना IDVAC होची कोन तापर मला electronic discrete variable automatic computer लाटा मन रखते was from which generation of computer past IBM 1401 IBM 70790 second generation. Okay. IBM 360 was developed in which generation of computer? Third. Param supercomputing belongs to fifth generation. The other name of the transistor computer which is second generation computer. The most important advantage of integrated circuit is reduced cost. Vacuum tube were used by first generation computer. ENIAC, UNIVAC. तापर आपनकर IBM 705 example of first generation computer. IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 110 second generation. IBM 360 series होची Honeywell 3000 series होची third generation. DEC 100 star 1000 PTP 11 Cray 1 होची fourth generation computer. UNIVAC 1107 second generation computer. Okay. लास्ट अनाउंसमेंट जो माने ओपीसी एसओ रो प्रिपरेशन करे पय चाहउछनी से माने 15000 बदल रे एबे स्पेशल ऑफर 2500 टका देके नै परिबे फाउंडेशन प्रोग्राम रहइबो 50% इमेज 50% थ्योरी रे पढाबो साइमल्टेनियसली तांको 3000 एमसीक्यू प्रैक्टिस पे करा जिवो साइमल्टेनियसली तांको 10 15 वर्ष प्रीवियस क्वेश्चन दिया जिवो केन से माने सॉल्व करि पाछो ना नै एटी पढला परे तापर लास्ट से माने मोबाइल प्रैक्टिस दिया जिवो लाइव डिस्कशन दिया जिवो लास्ट फोर्थ फेज 4 जोटा अछि सेटा लास्ट से माने दिया जिवो एग्जाम पूर्वरु खाली रैपिड रिवीजन माइंड मैप दिया जाए फॉर्मूला सेट विभिन्न जिनिस दिया जाए वीडियो भी दिया जाए मान लास्ट सुनी सुनी खाली सुई मन रखिबे कंप्लीट सिलेबस कवर होची एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन होची रूबेन स्ट्रेटजी हम बनै जेन बना अछि जो मन रेट अछि 25 टका रे एबे नॉल कर परिबे 9937193444 नंबर व्हाट्सएप कर परिबे आ जो मन को पकरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम अछि से माने एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच नै परिबे सेटा आपण मन को पई 6 जगह सब्जेक्ट 1200 टका पढ़ा जाउची जदि ସେମାନେ 6 सब्जेक्ट भी तो किछ गुरे सब्जेक्ट प्रॉब्लम अछि मन जनरल नॉलेज बहुत वीक अछंती ओडिया रे बहुत वीक अछन इंग्लिश रे बहुत वीक अछन त माने इंडिविजुअल भी नहीं परिबे किबा सिंगल सब्जेक्ट भी नहीं परिबे ताको इच्छा होतै पूरा फ्लेक्सिबिलिटी दिया अछि इनसेटिव फाउंडेशन बैच रे जे माने ड्रेस माने नहीं परिबे ओके और जो मन चाहउछंती टेलीग्राम ग्रुप रो पीडीएफ पाइबा पई आपण मन टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर परिबे मु देई दोचे टेलीग्राम ग्रुप रो आपण मन को लिंक 5 मिनिट परे आपण लाइव आज एंड कर दबा एटा होची बिजनेस हेल्पलाइन रो टेलीग्राम चैनल आपण माने ठीक क्यूआर कोड स्कैन करी जॉइन करि परिबे नले ऑल गवर्नमेंट एग्जाम प्री टाइप करिवे आपण मान चैनल मिलि जिवो सेठी आपण जॉइन करले आपण मान को पीडीएफ मिलि जिवो ओके आज रे किछ असुविधा अछि 9937193444 व्हाट्सएप करिवे ओके थैंक यू सो मच आज क्लास आपण एतिक पेशेंस धरि सुनिया था थैंक यू।